I can say sources of organic compounds. So, uh, natural organic compounds are prepared by living things such as plants and animals. Some organic compounds, such as proteins, are obtained from animals in the form of meat, uh, mutton, chicken, eggs, etc. And fats are obtained in the form of animal fats, milk, and butter, etc. तो ये बताने कि जो नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको तैयार किया जाता है, यानी लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार हो जाते हैं. तो सम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सच एज प्रोटीन्स, इसको हम एनिमल से हासिल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीट, मटन, चिकन, एग, एट्सेट्रा. इस तरह फीड्स को हम हासिल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनिमल फीड और मिल्क एंड बटर. तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनको इस तरीके से हासिल किया जाता है. नाउ प्लांट्स आर also rich source of organic compounds. Plants prepare a large number of organic compounds such as carbohydrates, proteins, fats, oil, vitamin, etc. तो प्लांट्स जो है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक रिच सोर्स है, यानी उसमें प्लांट्स के अंदर जो पौधे होते हैं उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं, तो काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं. तो अब प्लांट्स प्रिपेयर्ड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो पौधे जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फीड्स है, यानी जो फीड्स ऑयल है, और विटामिन्स एट्सेट्रा. तो इसके अलावा beside this, when plants and animals are dead, they are buried underneath the earth's surface. Under high temperature and pressures, in millions of years, these are converted into fossil fuels. These fossil fuels are the main source of organic compounds. The main source of organic compounds are discussed in detail below. तो यहाँ पर बताया गया कि सिर्फ जो पौधे हैं, जो जिंदा पौधे हैं, ये एनिमल्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स नहीं होता, बल्कि साथ साथ ये जो प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं, जब डेड हो जाते हैं, तो उसको ज़मीन के नीचे ये दब जाते हैं. यानी तो अब ज़मीन के नीचे जब दब जाते हैं तो हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है उसकी वजह से, और ये इस पर जो ना मिलियंस ऑफ ईयर गुजर जाते हैं, तो ये फिर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में इनको फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. और ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ये मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. और मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम इसको हम डिस्कस करेंगे नीचे. यानी प्लांट और एनिमल्स जब मर जाते हैं तो वो ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, और जब ज़मीन के नीचे दब जाते हैं तो उसके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जब उसको मिलता है तो ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. और ये फॉसिल फ्यूल जो है ये मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. तो अब मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? फर्स्ट है कोल. इट्स कोल. You can say coal is a brown, black solid mass and a major source of organic compounds. It is believed that coal is formed from the remains of plants. It is formed under high temperature and pressure
below the Earth's surface in millions of years under the bacterial and chemical reactions and the remains of trees and plants. It is converted into peat. The peat under high temperature and pressures is converted into coal. तो यहाँ पर ये जैसे ये temperature, so you can say this is a wood. So we see this is a wood. You can say the wood is converted into high bacterial uh, uh, reactions and temperatures. So this is converted into peat. The peat is converted into lignite under temperature pressures. So the lignite is converted into sub bituminous and again under high temperature pressures, and again under high temperature pressures converted into bituminous and finally into anthracite. So under high temperature pressures. So we can say that the wood is converted into anthracite. So first is second finally. तो ये बता रहे हैं कि इट इज कोल जो कोयला है ये के ब्राउन ब्लैक सॉलिड मास है, यानी सॉलिड फॉर्म में होता है जिसका कलर जो है ना ब्राउन ब्लैक होता है और ये इसमें ज़्यादा यानी मिकदार में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो अब कोल कैसे बनता है? कोल, ये जो कोल बनता है ये रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, यानी कोल्स कैसे बनता है? ये रिमेन्स ऑफ प्लांट्स से बनता है, यानी पौधों की जो बकायात होती है, यानी पौधे जब गल सड़ जाते हैं तो उनकी जो बकायात होती है उनसे ये कोयला बनता है। तो ये कैसे बनता है? ये ज़्यादा हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे बनता है ज़मीन के नीचे, यानी कि जो ज़मीन की जो प्लांट्स की पौधों की जो बाकियात है वो ज़मीन के सरफेस के नीचे दब जाती है और उस पे सालों गुजर जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो उसके नतीजे में क्या बनता है? कोयला बनता है और और कोयला फिर उसको यानी कि और ये जो बैक्टीरियल केमिकल रिएक्शंस अंडर द बैक्टीरियल एंड केमिकल एक्शंस, यानी इसके ऊपर जिस तरह ये यहाँ पर वुड है, वुड, ये वुड जो है इसके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन होता है ज़्यादा टेम्परेचर में, तो उसके नतीजे में ये फिर आगे इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के फिर फाइनली कोयला बन जाता है। तो यानी ज़मीन के नीचे से जो पौधे दब जाते हैं वो हाई टेम्परेचर पे और बैक्टीरियल एंड केमिकल एक्शंस के ज़रिए से उसमें से जो है वो कोयला बनता है। तो लेकिन कोयला बनने से पहले इनके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जो ये बताई गई है कि पहले ऊँट को जो है ना ये इसमें पीट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर लिग्नाइट बनता है, फिर उसके बाद सब बेटोनोमस बनता है, फिर बेटोनोमस, इसके बाद फिर एंथ्रासाइट फाइनली। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस है जिसके ज़रिए से जो वुड है उसको कोयला में कन्वर्ट किया जाता है। सो यू कैन से these are the stages under which the wood is converted, the remains of plant is converted into coal. So you can say the stages. Now, coal is a source of organic compounds. Coal is a rich source of organic compounds. Coal organic compounds का एक ज़ख़ीरा है और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस के ज़रिए से हासिल किए जाते हैं, यानी कि कार्बोनाइजेशन
and destructive distillation. So we can say that carbonization or destructive distillation, when coal is strongly heated on in the absence of air, the process is called carbonization or destructive distillation of coal. जब कोल को यानी जब कोल को गर्म किया जाता है हवा की गैर मौजूदगी में, तो फिर हम उस प्रोसेस को कहते हैं कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन कहते हैं या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन उसको कहते हैं ऑफ कोल। इस प्रोसेस के दौरान कोल को कोल गैस में कन्वर्ट किया जाता है। कोक और कैसे during this the coal is converted into coal gas, coke and coal tar and ammonical liquor, which are the sources of other organic compounds. इस प्रोसेस के दौरान ये जो कोल है उसको फिर मज़ीद कन्वर्ट किया जाता है कोल गैस में, कोक में और कोल टार और एमोनियम लिकर में, जो कि ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्सेज है। इसके अलावा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को कैसे हासिल करते हैं? द वर्ड पेट्रोलियम इज combination of two Latin words, petro, which means rock, and oleum, which means oil. The petroleum is also called a mineral oil or crude oil, or I can say liquid gold. It occurs uh, under the ground at different depths. It is complex mixture of solids, uh, liquids and gases, hydrocarbons, water, salts, and in addition to that, mixed with earth particles. It is generally dark brown colored and an unpleasant smelling liquid containing mixture of hydrocarbons. The hydrocarbons are alkanes, cycloalkanes, and aromatic compound. After refining, it is used as a fuel. It is also used for the production of useful products such as synthetic rubber, uh, explosives, and plastics. तो पेट्रोलियम जो स्नात है उनको हम कैसे हासिल करते हैं? तो पेट्रोलियम का जो वर्ड है ये पेट्रो से निकला, जिसका मतलब रॉक है। ओलियम, ओलियम का मतलब ऑयल, यानी कि रॉक ऑयल, मतलब है रॉक ऑयल, ROCK, रॉक ऑयल, रॉक ऑयल। सो पेट्रोलियम का मकसद मतलब क्या है? रॉक ऑयल। पेट्रोलियम को हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं और क्रूड ऑयल भी इसको कहते हैं। मिनरल ऑयल कैन से क्रूड ऑयल। सो लिक्विड गोल्ड, और ये इट अकर अंडर द ग्राउंड, ये ज़मीन के नीचे पाया जाता है मुख्तलिफ गहराइयों में। और ये क्या है? मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, हाइड्रोकार्बन्स। तो पेट्रोलियम है ये क्या चीज़ है? ये मिक्सचर होता है, उसमें सॉलिड्स भी होता है, लिक्विड्स भी होते हैं, और गैसेस हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, वाटर भी होते हैं, सॉल्ट्स। एंड इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा इसमें अर्थ पार्टिकल भी मिक्स होते हैं। ये अर्थ पार्टिकल ये भी मिक्स होते हैं। यू कैन से इट इज जनरली डार्क ब्राउन, ये डार्क ब्राउन कलर एंड अनप्लेजेंट स्मेल होती है। लिक्विड कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। द हाइड्रोकार्बन जो ये होते हैं इसमें क्या होते हैं? अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आफ्टर रिफाइनिंग के बाद it is used as a fuel. It is you can say used as a fuel. रिफाइनिंग के बाद हम यानी क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के बाद इनको यूज करते हैं। It is also used for the production of useful products such as synthetic rubber, explosive and plastics. तो क्रूड ऑयल को रिफाइनिंग के बाद उनसे फ्यूल हासिल किया जाता है। उसके अलावा
उनसे रबड़ और ये जो है ना एक्सप्लोसिव प्लास्टिक वगैरह भी बनता है। उसके बाद you can say the next source of organic compound is natural gas. You can say natural gas. So number three, natural gas is you can say it's a mixture of low molecular mass gaseous hydrocarbons. It is mainly composed of low boiling point hydrocarbons. These hydrocarbons are methane, ethane, propane, and tetrabutane. Methane is the main component of you can say 85 to 95% of the natural gas. In Pakistan, the natural gas is called soy gas. So I can say that what is natural gas? It's a source of organic compounds. So, so natural gas ये क्या होता है मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास गैस का हाइड्रोकार्बन। जो नेचुरल गैस है उसमें होते हैं लो मास गैसियस हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये लो बॉइलिंग इज कंपोज ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन। इसमें लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं मीथेन, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन। और मीथेन जो इसमें ज़्यादा होता है यानी 85 से 95% होता है नेचुरल गैस में। और पाकिस्तान में इसको स्वी गैस के नाम से पुकारते हैं। तो नाउ द ओरिजिन ऑफ नेचुरल गैस इज द सेम एज दैट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। जो नेचुरल गैस जहाँ से पैदा होता है वो वहाँ से पैदा होता है जहाँ से पेट्रोलियम और कोयला पैदा होता है। सोर्स ये किया होता है। तो इट इज़ फाउंड in combinations with petroleum reservoirs or it can also be found without petroleum। ये मतलब पेट्रोलियम के जो रिजर्वायर्स पाए जाते हैं उनमें पाया जाता है उनके साथ या इसके अलावा ये अलग भी पाया जाता है। तो ये इसको जो फ्यूल in homes, so we can say it is used as a fuel in homes। घरों में इसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसको गाड़ी में भी ऑटोमोबाइल्स में भी एज ए कंप्रेस नेचुरल गैस इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम सीएनजी बोलते हैं। तो इसको इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक और बेसिक रॉ मटेरियल्स जो फर्टिलाइज़र में भी इस्तेमाल किया जाता है। सो this was the natural gas। Now next one is source of organic compound is the plants। So plants are rich source of hydrocarbons। प्लांट्स के अंदर हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। So you can say the compounds are mainly proteins, carbohydrates, fats, and vitamins। These compounds are obtained from plants in the form of uh, leaves, stems, fruits, flowers, seeds, and roots, etc. These compounds are called natural products। Most natural products are extracted from plants and are used as medicines। तो प्लांट्स में क्या है प्लांट्स ये भी एक मेन सोर्स है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक मेन सोर्स है जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स है इसमें मेनली प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और विटामिन होते हैं। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम प्लांट्स से हासिल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यानी प्लांट्स की जो पत्ते होते हैं लीव्स जो तने होते हैं या फ्रूट्स होते हैं फ्लावर सीड्स रूट्स वगैरह होते हैं उन्हें पाया जाता है। और इस कंपाउंड्स को हम नेचुरल प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। सो मोस्ट नेचुरल प्रोडक्ट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड आर यूज्ड एज ए मेडिसिन्स। तो ज़्यादा जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्लांट्स हासिल करते हैं और हम इसको एज ए मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ करते हैं। नीम से दवाई वगैरह बन जाती है।
तो next one is animals. Animals are also the source of organic compounds. So a good source of organic compounds. So most organic compounds such as plants, such as proteins, carbohydrates, fats, vitamins are obtained from animals in the form of milk, meat, butter and eggs. तो जानवर जो है ये भी एक सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो यानी तो मैनी ऑर्गेनिक सच एस यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन्स है कार्बोहाइड्रेट्स है और फैट्स विटामिन्स ये हम एनिमल से हासिल करते हैं यानी मिल्क की सूरत में या गोश्त की सूरत में मक्खन या अंडे की सूरत में हम इनको हासिल करते हैं तो ये चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन सोर्स होता है इसके अलावा सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर लेआउट दिखाया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो सोर्सेज है वो कौन कौन सी है तो यहाँ पर sources of organic compounds there are two main sources which is animals and plants now from animals you can say we obtain petroleum gas proteins fats oil uh, so you can say that from petroleum gas we can obtain petrol kerosene oil diesel oil CNG which is a mixture of methane and ethane. From protein, you obtain eggs, mutton, chicken, beef, and fish. So these are source of proteins. So you can say also the fats oils. You can say milk, butter, and cheese. So next one is from plants. We can say that leaf plants, dead plants जो जिंदा होते हैं या जो मर जाते हैं तो जो मर जाते हैं उनसे हम कोयला हासिल करते हैं तो इसके अलावा जो जिंदा होते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स विटामिन्स एंड ऑयल्स को हम हासिल करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का जो सोर्स है वो वीट मेस प्रोटीन्स पोटैटोस बैरली या राइस तो गंदम यानी कि ये जो है ना ये कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं गंदम जौ आलू बाजरा और चावल ये कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है इसके अलावा जो प्रोटीन्स है प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस बीन्स vitamins are the source of vitamins are you can say the apples orange and bananas तो सेब जो माल्ट है और जो केले ये these are source of vitamins you can say all oils are in the form of palm oils olive oils you can say peanut oil and sunflower oil now synthesis of organic compounds in laboratory so how to prepare organic compounds in the laboratory you can see up to the beginning of the 19th century it was believed that living things, plants, and animals can only prepare the organic compounds due to vital force. The vital force theory was proved wrong when the German chemist Friedrich Weller prepared organic compounds called urea. CuNH2 twice from inorganic compounds such as potassium cyanate, and ammonium chloride on heating. The synthesis of organic compounds in laboratory started a new era of organic compounds. तो ये बताते हैं कि यानी सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे बनाते हैं लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली
तो 19th सेंचुरी तक तो ये कहा जाता था कि लिविंग थिंग्स प्लांट्स एनिमल्स ओनली प्रिपेयर, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से तैयार कर सकते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं या उनसे ही तैयार किया जा सकता है। लेकिन डी टू वाइटल फोर्स, लेकिन ये वाइटल फोर्स जो थ्योरी थी ये फिर गलत साबित हो गई जब एक जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक मिलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको यूरिया बोलते हैं उसको तैयार किया फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिससे यूरिया को तैयार किया गया वो कौन से थे? पोटेशियम साइनेट और एमोनियम क्लोराइड। तो इन दो को मिला के गर्म किया तो उससे यूरिया बन गया। तो इसके बाद फिर ना ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक सोर्स, एक नया ज़माना शुरू हो गया इनकी तैयारी के बाद। जब फ्रेडरिक ने उसको तैयार कर लिया तो उसको कैसे तैयार किया आगे बताया गया। So we can say this is a potassium cyanate, it's ammonium chloride mixed. So on heating they produce ammonium cyanate plus KCl. So you can say ammonium cyanate again is converted into urea. So these are the inorganic compounds which are mixed together, and on heating they produce potassium cyanate, ammonium cyanate, and ammonium cyanate was again converted into urea. So you can say urea is the organic organic compound. Urea is an organic compound, and these two are the inorganic compounds. So these are the inorganic compounds. This I can say potassium cyanate and ammonium chloride, and from this was prepared organic compounds. Now millions of compounds have been prepared in the laboratory. मिल्स के हिसाब से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं रोजाना की बुनियाद पर तैयार किया जाता है लेबोरेटरी में। दिस कंपाउंड रेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये इस कंपाउंड में सिंपल भी होते हैं कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो आजकल हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी यूजिंग ड्रग्स, मेडिसिन्स, फ्लेवर्स, फ्रेग्रेंसेस, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक्स, पेंट्स, synthetic fabrics, fibers, cosmetics, detergents, pesticides, insecticides and herbicides. All these have changed our lives. तो आजकल मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार किया जाता है लेबॉर्ट्री में और रोज़ाना की बुनियाद पे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। तो इसमें जो है सिंपल कंपाउंड भी होते हैं और इसमें कॉम्प्लेक्स भी होते हैं कंपाउंड्स भी होते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स बनते हैं इसको लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाता है, जैसे कि ड्रग्स है, मेडिसन है और फ्लेवर्स है, फ्रेगरेंसेस है, इनसे फर्टिलाइजर है, प्लास्टिक पेंट से, सिंथेटिक फाइबर है और कॉस्मेटिक्स है। इसके अलावा जो है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, ये सारे जो है ना ये इंसान की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। और so uses of organic compounds. So say things we use in our daily life are most organic compounds such as food we eat, the clothes we wear,
dependence on organic compounds, you can see is increasing day by day. It has changed our lifestyle. तो यानी यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहम रोल होता है। तो क्योंकि हम जो खुराक खाते हैं या जब हम कपड़े पहनते हैं तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से सोर्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं। तो डिपेंडेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी जो हमारी दारोमदार है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो क्योंकि हमारी लाइफ का एक अहम जुज होता है। सो यूज एज अ फूड द फूड जो हम द फूड वी ईट इन आवर डेली लाइफ सच एज मिल्क मीट egg vegetables etc consist of carbohydrates proteins vitamins fats which are all organic compounds। तो जो हम खुराक खाते हैं और डेली लाइफ में यानी कि जैसे कि दूध दूध की सूरत में या गोश्त एग्स है वेजिटेबल्स है, तो ये क्या होते हैं, ये इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्रोटीन्स विटामिन्स और फैट्स वगैरह होते हैं। तो ये सारे जो है ना ये सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो ये सारे क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। नेक्स्ट वन यूज इज क्लोथिंग। द क्लोथ्स यूयर जो हम कपड़े पहनते हैं मेड ऑफ फाइबर्स। These fibers are either naturals, such as cotton, silk, wool, you can say, etc., or synthetic fibers such as nylon, polyesters, and acrylic are organic compounds। तो कपड़े जो हम पहनते हैं रोज़ाना ये फाइबर से बने होते हैं। ये फाइबर जो होते हैं ये नेचुरल होता है, सच एज कॉटन की सूरत में नेचुरल होते हैं। जैसे कॉटन है, सिल्क है, वूल है, या सिंथेटिक फाइबर होते हैं सच एज नायलॉन पॉलीस्टर एक्राइलिक हो एक्सेट्रा। ये सारे जो है सिंथेटिक हो फाइबर है। एंड ये सारे क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। दिस ऑल जस्ट कंसिडर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यूज चीज़ें medicines. Most of the medicines that we use are organic compounds. These are naturally synthesized from plants and are used as medicines. Most of the life-saving drugs, such as antibiotics, uh, anti-inflammatory, anti-malarials, are synthesized in the laboratory। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेबोरेटरी मेडिसिन में भी हम इनका रोल होता है, जिससे कि मोस्ट ये मेडिसिन जो होते हैं ये इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से बने होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये जो है ना ये नेचुरली बनाए जाते हैं प्लांट्स और इंट्रोड्यूस्ड मेडिसिन में इनका इस्तेमाल होता है। सारी काफ़ी सारी जो ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं जो ड्रग्स हैं जैसे एंटीबायोटिक्स है और कैन से एंटी इन्फ्लेमेटरी कैन से एंड एंटी मलेरियल। तो ये सारे जो है ना ये लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज कैन से that use as a fuel. The fuels which we use, such as petrol, diesel, oils, compressed natural gas, I can say coal, and natural gas or organic compounds। तो जो फ्यूल है, फ्यूल यानी कि जो हम इस्तेमाल करते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल ऑयल, compressed natural gas, सीएनजी, कोयला और नेचुरल गैस है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। Use of chemical materials. The chemicals that we use, such as rubber, paper, ink, plastics, fibers, fertilizers, pesticides, insecticides, cosmetics, paints, detergents, और all organic compounds। ये सारी चीज़ें जो है ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। यानी ये रबड़ है, पेपर, इंक, प्लास्टिक्स, फाइबर्स,
fertilizers, pesticides, insecticides, paints, so we can say cosmetics or detergents, ये सारे क्या है organic compounds है. Uses as a life molecules, thousands of organic molecules, we can say they take part in our as body functions. There are four main groups of organic molecules, that are carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids, so it combines to build cells and their parts. These molecules are called life molecules. तो यूज ऑफ लाइफ मॉलिक्यूल्स जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी बॉडी के फंक्शन में इनका अहम रोल होता है. तो फोर मेन ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं. तो ये जो फोर ग्रुप्स हैं ये कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो सेल्स बनाते हैं और उसके पार्ट्स बनाते हैं. तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इसको कहते हैं लाइफ मॉलिक्यूल्स, यानी ये जिंदगी को जन्म देते हैं. सारी चीज़ें मिलके लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, वी कैन से ये चार चीज़ें जो है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, तो ये एक लाइफ बनाते हैं, लाइफ मॉलिक्यूल्स इसको कहा जाता है. सो इनसे these are the, some pictures given which are different organic compounds. So you can say is adhesives, you can say carpeting, cosmetics, so fertilizers, paints, rubber, fabrics, you can say plastics or detergents, soup, medicines. These are all organic compounds. Now, that is given, you can say some of the uses for organic compounds in a single room. So, use of organic compounds. That is given paints, पेंट्स जो हम दीवारों के ऊपर कराते हैं ये क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. इसके अलावा इंसुलेशन जो हम करते हैं तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. और इसके अलावा जो क्लीनिंग सप्लाईज है, पेस्टिसाइड्स है, यानी जो पेस्टिसाइड्स है या क्लीनिंग हो सप्लाईज है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. जैसे कि ये बताया गया है, यानी क्लीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. तो TV and other electronics are also made of organic compounds. Printing ink ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. इसके अलावा परमानेंट मार्कर्स, कंप्यूटर्स हो गए, पेपर प्रोडक्ट्स हो गए और फूड टेबल्स, तो ये सारे घर के अंदर जो चीज़ें होती है ये सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है. रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बड़ा अहम रोल होता है. Now the next one is, you can say 11.4. You can say this is 11.4. So alkenes and alkyl radicals. So we will discuss this in you can say next video. So thanks for watching.